Okay, so if any chart you are analyzing, so in BNN, what we will do, very first thing, we can understand the combinations of every planet, correct? And how we're doing it? In last session, we have seen any planet, like let's say if any planet placed in Lagna. So just see the 5th and 9th house from it. Okay. 7th house from it. 311 from it. All these planets are making combination. Combination with whom? Combination with the planet, like the reference with the planet for which you are doing all assessment. Okay, this reference planet is very important because many a times we get confused. Like when we say the combination, let's say 4 planets are in combination, so we'll write down 4 planets. So what some people think, if I change the sequence of these planets, result will be same. No, the sequence is very important, and I will teach you how to arrange this sequence as per degreically. And every sequence planet in combination will give different result. Okay, so the reference planet means the first planet by which this combination is starting. Sometime reference planet can be in middle, sometime at the end. Okay, so with that also result will change. So we'll see these things. Okay, so the point is, once we decide the combinations, the planet present in 159 houses, 7 houses, after that you need to judge whether that planet is strong or weak. Okay, I think this content is not covered yet in last session. So now, for deciding the power of planet, whether planet is weak or strong, in other system of Jyotish, we have different systems, different methods to judge the strength. Okay, but in our Nadi system, this is much easier. Okay, in other system, there is more technical techniques are there, like Shadbal, and it's a very complex process to understand the Shadbal of every planet. Okay, there are multiple parameters for it. But in our BNN, this is much easier. Okay. So there are 6 ways through which you can understand the power of planet. Only 6. Okay. So we'll discuss these 6 points in detail. But for now, as you can see, the first point, planet is considered strong when it is in own sign, exaltation, in friendly sign. Okay, these are the 3 parameters through which we can call it strong. Okay, now own sign means, I hope everybody understood. Anybody in the class who don't know what is the own sign? जो बहुत ही बिगनर है, जिनको अभी राशि का भी आइडिया नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना क्लास में? They can raise hand. ठीक है, so this much of knowledge you have. Own sign. Now come for the exaltation sign. Okay, this is important. Okay, friendly sign. For this, in last session, I have shown you one table, which I told you to memorize. Okay, friends and enemies. Okay, that is most important part. Okay, you can't do analysis of chart without friendship and enmity. Okay, so you need to memorize it. Now the exaltation part is what, which we need to understand in deeper manner. Correct? Own sign, sun own sign is what? Leo. Jupiter own sign, Sagittarius, Pisces. Mars, Aries, Scorpio. Like this, we know every planet sign. We call it own sign. So a planet placed in its own sign, we can call it as powerful, or this is having strength. Correct? If planet is present in friendly sign,
then also it can show its good result, powerful result, not good. Okay, it's not mandatory that it will always give good result. It depends upon the other parameters, but yes, it is powerful. Okay, so you need to keep this point in your mind. There are two words, powerful and good and bad. Powerful and weak is something else, good and bad is something else. Okay, planet may be powerful, but it will not give you good result. That can be possible, no? Planet can be weak, but it can give you good result. So in that case, we can do some remedies. This is the area in which remedies is bound to work. If planet is weak and in your chart it is showing good result, it can give good result. So obviously we can do some remedies to give some power or strength to that planet. And in another situation, planet can be powerful, but it is giving bad result. So in those cases, we do some parihar or shanti remedies. Correct? This is how you should decode the chart. This is how you can recommend the remedies. So now we know about own sign, we know about friendly sign. Exaltation sign also you all know, I think. Okay, but we will learn something else for this exaltation point in today's session. There's one more important point in this first point. In Nadi, besides sign occupation, planets around the planets are the prime deciding factor. It means what? It means the planet placed with that planet, like planet can be placed, like some planet is in Lagna, and 2 and 12, there are some other planets. Those planets will also impact. So result can be modified by those surrounding planets. Okay. So before we go to surrounding planets, let me discuss this exaltation point now. Yes, so for Hindi students, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम ग्रह की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, वैदिक में या बाकी सिस्टम में बहुत सारे मेथड है मेरे पास. हम शेड्यूल निकाल सकते हैं, हमारे पास डिग्री वाइज मेथड्स हैं, ठीक है. इफ यू रीडिंग एसके मेहता टेक्निक्स, so they just the strength with the help of degrees. Okay, planet placed in the highest degree, different strength. Planet placed in the lowest degree, it will give different strength. If you go for नक्षत्र स्टडी, नक्षत्र में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका अलग है, बट हमारे नाड़ी सिस्टम में बहुत इजी है. यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ 6 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है. पहला मेथड क्या है कि वो ग्रह या तो अपनी राशि में हो, ठीक है, या वो ग्रह अपने फ्रेंडली साइन में हो, ठीक है, या वो ग्रह अपने उच्च राशि में हो. ये 3 मेथड हो गए. बाकी 3 मेथड कौन से हैं? वो ग्रह अपनी नीच राशि में भी हो सकता है, ठीक है, वो ग्रह अपनी एनिमी साइन में भी हो सकता है. 5 हो गए. छठवा कौन सा हो सकता है? क्या कंडीशन हो सकती है? कोई गैस? किनके साथ बैठा है, किनके साथ बैठा है? वो सराउंडिंग्स हो गए, वो नहीं, सराउंडिंग्स हो गए, कंबस्ट नीच होना. Exaltation we have covered, correct? So what is the opposite of exaltation? Debilitation. That there are two ways now. Own sign, okay, friendly sign, enemy sign. Now the sixth is combust, अस्त होना. तो ये 6 मेथड हैं जिससे हम लोग आप ग्रह की स्ट्रेंथ निकालोगे. और जो ग्रह उस ग्रह के आसपास बैठे होंगे सराउंडिंग में, 212 में, ठीक है, या 311 में, उसका भी असर होगा, बट वो एक एडिशनल है. बट मेजरली हमें 6 मेथड से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है. इसमें स्वराशि क्या है आपको ये पता है पहले से, ठीक है. फ्रेंडली साइन मतलब मित्र राशि, शत्रु राशि ग्रह, ये भी आपको पता है. लास्ट क्लास में इसका चार्ट भी दिया गया था, वो आपको
कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में, है ना, मेमोराइज, ठीक है, उसको याद रखेंगे। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, वो है उच्च का होना। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है और इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी आज, ठीक है। तो ये है, हाँ भरत जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे। हेलो। हाँ, जैसे सर हमने जब हम ये बात कर रहे थे कि 212 कि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमने सर कुछ चार्ट पीछे डिस्कस किए थे आरजी राव सर की बुक में, वहां पे सर जैसे जो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि वहां पे 311 में प्लेनेट हैं, अगर एनिमीज प्लेनेट, तो उसको हम पाप करत्री में ले रहे हैं, तो वहां पे 212 और 311 बोथ कंसीडर करेंगे। अगर 212 में नहीं है, 311 में है, तो भी हम वीक मानेंगे सर? नहीं नहीं, जब तो हम सर करते, अगर मेरा पूछने का कि अगर हम 212 में नहीं है प्लेनेट, 311 में है, हाँ तो लेकिन मानेंगे, वो एनिमी, हाँ तो मानेंगे इसका उसको। मतलब, तो अगर 212 में प्लेनेट नहीं है, 311 में फ्रेंडली प्लेनेट है, तो तब हम उसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे सर? तब हम उसको वीक नहीं ना देंगे? अगर हम उसको पापकर्त्री में एनिमीज में ले रहे हैं, तो अगर फ्रेंडली प्लेनेट हैं 311 तो में, उसको तो शुभ तब करते हम में लेंगे। शुभ करत्री, ठीक है, हाँ थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जब भी हम किसी योग की बात करते हैं ना, तो आपको दोनों एंगल सोचना है उसका, है ना। तो बहुत बार बुक्स में क्या है कि एक ही मेंशन है पाप कर्तरी, तो उसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना, शुभ कर्तरी। दूसरा सर पॉइंट था, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ट्राइंग एस्पेक्ट को लेते हैं 159 को, 159 में कोई भी योग बन रहा है एग्जांपल, बट 212 या 311 में नहीं है, तो हम उसको योग कंसीडर करेंगे या वीक योग मानेंगे उसको? अगर देखिए 212 में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, 212 में कोई ग्रह नहीं है तो वो वीक हो गया वो, बट वो 311 में है, यस, और 159 वाला टाइम में है, तो उसको क्या मानेंगे? हाँ तब वो कॉम्बिनेशन तो रहेगा। देखो इसमें दो चीजें हैं जो आपको मैं क्वेश्चन समझ गया। इफ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 159, ओके, तो वो तो हो गया कॉम्बिनेशन, ओके, बट हाउ विल यू डिसाइड इन दैट कॉम्बिनेशन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, करेक्ट? वो डिसाइड होगा आपका 212 से। और 3 और 11 को भी ले सकते हैं साथ में? 3 and 11 आपके स्टेप बाद आएगा, बट फर्स्ट 212। ओके, तो सर मेरा वो ही 311 कैसे है? आई विल गिव यू अनदर आइडिया, मोस्ट easiest thing, okay? See, whatever rules we are studying now, you need to understand these things very carefully because you are going to apply these things in multiple ways. For example, Sun is placed in Gemini. Yes. Okay, so what will be the result? What you call it? Whether this is a good placement, bad placement, or what? फ्रेंडली प्लेनेट, फ्रेंडली साइन है, गुड प्लेसमेंट. Good placement, but I will give you another way of thinking. Okay, so if you can understand it, na, you can derive many predictions. Okay, you can call it blank chart or whatever people saying it. If Sun is placed in Gemini, okay, so we know Gemini sign is ruled by Mercury, correct? Mercury is what? Friendly planet with Sun. Yes. Okay, now understand, after Gemini there is Cancer and then Leo. Yes. Okay, it means Sun own sign. Yes. Okay, so from Gemini, Leo is the third house. Okay, from Gemini, 11th house is which sign? Aries. Okay, so for Sun, Leo is own sign and 11th house is exaltation. Okay, and now what we have discussed, 3 and 11 are the planets which give positive support to the planet. It means whichever planet is placed in Lagna, na, 3 and 11 house always support that. That's why
in last class you have seen on PPT in which we have said Venus placed in 3 and 11 house from the sun is not considered as an enemy. Right, sir. We have Understand, said it, sir. na? Understood, na? So 311 will support like this. समझ समझ गए ना? तो Understand. like this, from now onwards, if you are decoding any result, planet is placed in some sign, okay, apply these BNN rules. You have to think like this, okay, sun placed in Gemini, 3 and 11 house always support. And remember, for Gemini, 3 and 11 always own sign and exaltation sign for Gemini people. So sun is most important planet in Gemini. That's why in Bhrigu Nandi Nadi, you see many horoscope where sun is placed in Gemini sign. Okay, and Rishi given very good predictions for them. Why? Because of this Gemini people, sun in Gemini, 3 and 11 is sun own sign and exaltation sign. And as per BNN rule, 3, 11 houses always support. Okay, so you can apply these things for every planets. Same thing, sun in Virgo. Sun in Virgo. Now if sun in Virgo, what is the 311 situation? Now this is different from the Gemini. So now here sun will also give different result. ठीक है, ऐसे. You can also see 2 and 12 also. Like for example, sun in Pisces. You know, sun in Pisces and sun in Aries. If you compare both, as per Bhrigu Rishi, sun in Pisces is most powerful situation for the sun as compared to sun in Aries. Why? Because sun is heading towards exaltation. Yes. So there Rishi says, if sun is placed in Pisces, it's already in the friendly side. Okay, powerful, and it is moving towards the exaltation. Okay, so this is more what we call good situation for the sun as compared to sun placed in Aries. Sun in Aries, it's already exaltation, but it's moving towards the Taurus. Not debilitation, Taurus sign. No? Enemy sign. Enemy sign. Okay, so like this for every placement, again you can use all BNN principles. Okay, so use this BNN combinations. So we are teaching of combinations. Okay, so you can use it in multiple ways. Okay. I hope this point is clear what Bharat ji is asking. मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर दूं इसको भी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए. मैंने इसमें एग्जांपल आपको उदाहरण में ये दिया कि सूर्य अगर मिथुन राशि में है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट एसेस करने का एक तरीका ये भी हो सकता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के एंगल से कि मिथुन राशि में सूर्य हुआ तो आपको पता है कि हम बीएनएन में बात कर रहे हैं तीसरा और 11वां, 3rd and 11th हाउस ऑलवेज सपोर्ट. ठीक है. सो जेमिनी साइन में 3 and 11 में कौन सी राशियां आती हैं? सिंह राशि और मेष राशि. सिंह राशि सूर्य की खुद की राशि है, मेष राशि उसकी उच्च की राशि है. तो जेमिनी में सन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस कारण, क्योंकि उनको उन दोनों जगहों से सपोर्ट मिलता है. अच्छा, हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है ये भी कहना गलत है. डिपेंड्स कि वो 311 से किस तरह का भी सपोर्ट है. या सन, इफ सन इज गिविंग मैलेफिक रिजल्ट ड्यू टू सम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, तो 311 उसको और बढ़ाएगा. एग्जाम्पल्स आएंगे, हम बात करेंगे ऐसे, बट आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. 311 सपोर्ट, उसको पैसे समझे. बट जो एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा रिजल्ट का, वो बनेगा 1597 से ही. ठीक है. 2 and 12 क्या होते हैं? 2 and 12 आपको बताएंगे कि उस कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्ट मिलेगा आपको आगे ना, या जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे वो सेकंड हाउस 2, 6, 10 हाउस देते हैं. और जो 12th हाउस है वो इसका पास्ट बता रहा है कि जो कॉम्बिनेशन की वजह से रिजल्ट आपको मिला वो क्यों मिल रहा है. So it means 212 is also important in that sense. That's why in that statement it is written, और लिखा हुआ है कि 1, 12, 1, 2, 3, 11,
5, 9, 7. All are making combinations. Okay. But in combinations also, major part is 1, 5, 9, 7. Okay. Rest of other positions only supporting. हाँ गगन जी बोलिए. सर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को भी बेसिकली पावरफुल बोला जाता है. तो बीएनएन में उसे कंसीडर करेंगे, और इट्स लाइक टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि हम रेट्रो बाद में पढ़ेंगे. रेट्रो हम अलग से कवर करेंगे. देयर आर सम यूनिक रूल्स फॉर द रेट्रोग्रेशन. करेंगे उसको. पावरफुल होता है यहाँ भी, बट विथ पावरफुल आल्सो. नाउ अगेन ना, पावरफुल मींस व्हाट? Negative or positive powerful, both can be Yeah, possible. like I'm not saying good or bad, I'm just saying powerful. Powerful वो समझेंगे उसको. उसके थोड़े रूल्स हैं हमारे पास, करेंगे उसे भी. ठीक है सर. हाँ शायद. Sir, just now you gave the example of Gemini, like if Sun is in Gemini, so ahead we have Leo and behind is Aries. 311 we are talking about now. Sir, it's only the 311 these signs we are talking about, or the planets, if some planets like they are enemy to that sign, if they are present there in 311, so will they still be supporting? Is it still a positive support to that No. or not? Support is there. Okay, maybe Okay. हो सकता है positive भी हो, negative भी हो. That हाँ जी. depends on the planet. Okay, Saturn can also place in Aries, na? हाँ. Sun in Gemini, Saturn in Aries. Then Saturn support करेगा, but now you know what kind of support Saturn can give to Sun. वो चेंज होगा ना वहां पर. वो हमको वैसे सोचना है. तो रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा ऐसा नहीं है. डिपेंड लाइक विच, लाइक इफ लेट्स से इफ नो प्लैनेट इज प्रेजेंट, then you can consider it as a good result, no issues. But if planet is present, now that depends upon the planet again. Okay. तो उसका भी तो flavor mix होगा ना. Some flavor will. Right. So can you repeat this, sir? Yes. In Hindi or English? Any language, though both are fine. Okay. Thank you, sir. हाँ. So छाया जी ने ये पूछा अभी कि let's say if planet Sun in Gemini, okay, and if there are two situations, okay, in 311 no planets are placed. Okay, in second situation 311 planets are placed, then what will be the result? So the thing is, you need to understand it. If no planet is present, then Sun will give good result. Why? Because the sign in 311 is friendly and exaltation sign naturally. But if planet is placed in 311, now it depends like which planet is there. If Jupiter is there, Sun will get positive support. Whatever Sun wants to do, he will do it positively. Okay, without harming, without giving you any bad karmas. But let's say if Saturn is there, Rahu is there, then you can assume that will also support. But what kind of support? That depends upon the planet. Sun will give the result. Now, how Sun will deliver the result, how it will perform action or karma, that depends upon Saturn and Rahu. Okay, so basically what we are saying, if planets are there, then planets will be impacting more than the house, the Yes. Sun. Okay. If Planet house is friendly but planets are not, then it will not give good results. It's not like it will not give good result. It can give good. See, good result, giving good or bad, that depends upon the combination again. Okay. This 311 planet will tell you the way. Like 311 planet means what? Strength, correct? Strength, positive or negative. It is not saying you whether I will give you good result or bad result. No, good and bad result depends totally upon the combinations. Okay, 311 means what? Is support. Okay. Like for example, I have some issue with my friend, let's say. Okay, some of my close friends. Now I have my another friend also, and he is in police. Okay, now I want to take support from that police friend.
Now you can understand what kind of support he can give me. Okay, he can still help me, but in its own way. तो पकड़ के उसको जेल में डाल देगा, उसको मारेगा, पीटेगा, समझ रहे हो? मेरा तो काम तब भी हो रहा है ना. Yeah, okay. But how I am executing it? एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरा एक और फ्रेंड है जो बहुत साधु संत आदमी है, और वो उसको जाके पहले समझाएगा कि भाई ऐसा मत करो, ये करो, वो उसको प्यार से समझा के अपना काम करवाएगा. मेरा काम तब भी होगा. सो सन इज लाइक मी. ओके, मेरा काम दोनों कंडीशन में होने हैं. ठीक है, एक में वो कुछ भी करेगा, वो उसे मारेगा, पीटेगा, दूसरे में वो उसको समझाएगा, ऐसे. ठीक है. सो इट मीन्स द राहु केतु सैटर्न 3 in 311 still help you, but the way of executing that work is something else. Okay, but okay, there is another condition for it. Let's say if Sun is placed in Gemini, okay, and in 5-9 there is Rahu Saturn. Okay, तब तो सन के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे हमें. इंडिविजुअल सन के रिजल्ट इज गुड. इन प्रोग्रेशन वी कैन प्रिडिक्ट, बिकॉज इन प्रोग्रेशन planets progressing over some planet, so it will impact more on that particular planet. Okay, so वहां पर हमको रिजल्ट हमको डिफरेंस दिखाई देगा. बट whenever you see the result in combinations, so always you need to depend upon other planet also. Then only we can able to derive the complete result. ऐसे 311, 212 supportive planets, strength, these things. Main result giving planets are 1597. ठीक है. Yes, sir. ये सब क्लियर होगा. जितने एग्जांपल्स वी विल डिस्कस, ये क्लियर होता चलेगा आपको. इसने एड्रेस किया था मनीष जी ने या मृदुला जी, बोलिए. यस सर, मैंने किया था. हाँ, बट आई होप वो क्लियर हो गया. मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे 3-7 वो 3-11 में आप सपोर्ट बता रहे हैं, और वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप और एनिमिटी पे. ऐसे ही 159 में भी बताया था कि 159 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बट वो फ्रेंडशिप और एनिमिटी वहां भी एप्लीकेबल होगी ना? 159 में तो हमेशा फ्रेंड ही रहेंगे ना. अच्छा, सपोज जैसे मेरे पास एक हॉरोस्कोप है, कैंसर लगना है, जिसमें राहु लगन में है, 7th में केतु है, और 9th हाउस में मार्स है. तो क्या ये राहु और केतु मार्स को सपोर्ट करेंगे उस केस में? 159 ये कॉम्बिनेशन बेटर है सर. 159 और 7 था. करेंगे. ओके, देखिए 159 में आपने बोला 1 में बैठा राहु, मार्स कहाँ पर है? मार्स 9th हाउस में. 9th हाउस में, so obviously it is making combination. और 7th में केतु है. 7th में केतु, so 7th में केतु आएगा ही, obviously बात है. ठीक है. जी. So it means what is the combination? Mars Rahu, okay, and Ketu also we can write it down, but technically Ketu वो combination में नहीं आना, क्योंकि राहु केतु always in the on 1-7 axis ना. राइट. जहाँ जब भी आप राहु लोगे हमेशा केतु लोगे क्या हर बार? तो ऐसा नहीं होता. ठीक है. So you can take Mars and Rahu. Now your question is whether this Mars Rahu will help each other or not. Yes sir. Okay, so by nature, Mars and Rahu are friends or enemies? Enemies sir. Enemies. Okay, so enemies, that flavor of enemies is always there. Okay, rahega. But when we say the combinations is for some particular events. Correct. There are many combinations, good combinations created by Mars and Rahu. Okay, all those events we will experience. Okay, what experience hoga. But in progression, what happens in progression, it depends upon the progression, correct? Progression may whether it is sufferings or gains or good event, bad event, वहां पर मार्स राहु का रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेशन where that progression is happening. Okay, progression when happens with Mars, result is something different. But progression when reached to Rahu, result is different. दोनों की तरफ से आपको सेम कॉम्बिनेशन ही मिलेगा मार्स राहु.
पर रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेंगे। क्यों? उसका कारण है, ठीक है, वो थोड़ा उसको मैं आपको समझाऊंगा बाद में, बट अभी फिलहाल आप इतना समझो कि दे विल सपोर्ट ईच अदर, ओके, फॉर कॉम्बिनेशंस, ओके, क्योंकि 159 में रहेगा, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो रिजल्ट देगा वो। राइट, थैंक यू। हाँ, बट देयर आर सम कॉम्बिनेशंस आल्सो व्हिच इज नेगेटिव कॉम्बिनेशंस फॉर मार्स राहु, वो भी रिजल्ट उसको मिलेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में आपको फ्रेंडली और एनिमी वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है, बट ये 311 में 212 में हो तो वहां पर आप उसको फ्रेंडशिप एनिमिटी पूरा लगाओ, ठीक है, सपोर्ट करना नहीं करना वो 311 212 पे डिपेंड करता है। 159 इज प्योरली कॉम्बिनेशन, वो रिजल्ट देगा अच्छा बुरा दोनों। ओके सर, थैंक यू। यस मृदुला जी। हाँ जी सर, सो मतलब कुछ एक क्वेश्चन है, तो एक वन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट इज इट, कैन वी जस्ट कॉल इट सपोर्ट और कैन वी कॉल इट इन्फ्लुएंस? 311 support, okay, and 211 we can call it influence. 212 is influence, okay, and 159 again is support. 159 is support, combination, okay, main result, giving planets, everything. Okay, 1597. right, 1597. Also sir, one more thing, lot of times like when we are going for progression and things, we start considering dispositor also. So how important is that in the Dispositor is always important, huh? Like Sun in Gemini. Dispositor is what? Mercury. Mercury. Now Sun is connected with Mercury also. Okay, so depending on the friendship and enemy, they will give the result. But do we consider the trine for Mercury in progression? For Sun in Gemini? No. Like if the progression is No, going no, to no, Sun, because it is in Gemini, do we start considering that trines and those No. combinations also? No, so it means in combination you can write it down Sun plus Mercury like this. Okay, we can just Okay. consider the planet, but not its trine or anything else. Yes. Okay. Okay. So one last question I have, like when we are considering aspects, like for example, we have a 12th aspect of Rahu, right? So if the house, like if there is no planet in one house behind Rahu, so would we still consider that, you know, the Rahu energy would be there in one house before Rahu? Like if the house is empty. No, if, okay, you are saying retrogression effect. Yeah, sir. Like we have the 12th aspect of Rahu, right? 159 and 12. Or like even we can consider 159. Like, so if there is no planet in the 5th or 9th, so would the Rahu energy still be on that house? Like in progression, if there is other planet that comes there, Okay, I would we will consider Rahu effect? Yeah. So if no planet is placed in 5-9, okay, still you can see the impact of Rahu in 5 and 9 also. Okay. Okay, Rahu second is not there. Okay, 12th is there. Right. This is what you are asking, huh? Yes, yes, sir. Yes. In 12th also you can feel the impact of Rahu. Even if the house is empty, like Empty, if progression, if something else comes, we can consider Rahu. See, when let's say if the Jupiter progression is reaching to the 12th house. Yes, sir. From the Rahu. So the impact you will see from there only. Okay, sir. It will start its result. Yes, sir. That's what. Okay, Right. so wo hoga. Again, there is a rules for it. If Rahu and Ketu is cuspal degrees, तो फिर आपको 12th पे नहीं लेंगे. That you have to consider from Lagna only. Okay. First Rahu position only. ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग ना, इधर अभी आप पहुंचे नहीं है इसमें. Okay, sir. No problem. Thank you so much. Yes, Chaya ji. Sir, just want to clear one point. Sir, अभी आपने example लिया था ना, Rahu and Mars and 7th is Ketu. So for Rahu and Ketu, we don't consider the 7th because they are always opposite each other. But now in combination, Mars is also there, na? Rahu and Mars.
So for Mars also we won't consider Ketu, or for Mars we'll have The we'll take Ketu. situation is different here. See, the combination, if I see, now depends like your difference point. Okay, let's say I am seeing this combination with like Mars Rahu, correct? I'm starting this combination with reference to the Mars. Now for Mars, support is what? Support is Ketu, because that is the 11th house. Huh? Yes. So Ketu will act as a supporter, but the combination it is creating with Rahu. Rahu is not there. Okay. Like this. Thank you, sir. Okay. But when you consider the same combination with Rahu Mars, okay, then you see there is no support for the Rahu from the Ketu. Right, sir. Okay, maybe some other planets it can we can give support. It depends upon the chart. Okay, but Ketu supporting Mars, but not Rahu. Now if Ketu support Mars, what will be the result? That you know the with friendship and enmity. Thank you, sir. सर एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जैसे आपने बताया केतु मार्स को सपोर्ट करेगा, बट केतु 11th में नहीं है मार्स से, वो 1-5 वो 7th हाउस में है केतु, और मार्स 9th हाउस में है। तो वो तो मार्स अगर 9th में हुआ, ठीक है, तो वहां से अगर आप केतु को काउंट करेंगे, ओके, तो कौन सा हाउस में आएगा केतु? ओके, राइट सर, राइट, है ना? ऐसे मैंने क्या बोला कि हम जब योग बनाते हैं, ठीक है, तो योग आप किसके रेफरेंस में बना रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जब राहु मार्स का योग लेंगे वो एक अलग रिजल्ट देगा आपको, बट जब आप मार्स राहु का योग लेंगे वो एक अलग तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक है, दोनों ग्रह सेम है, ठीक है, मार्स राहु राहु मार्स, तो रिजल्ट सेम मिलने चाहिए, ऐसा लगता है ना, बट ऐसा है नहीं, कि दोनों के रिजल्ट अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपको सब धीरे धीरे क्लियर होगा, जो आपके मन में डाउट्स हैं ये सब हम लोग करेंगे एक एक करके, और उससे पहले बहुत सारी चीजें हमको और कवर करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस पे, है ना। सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर टू ऑल। इतना समझ में सबको आ गया होगा अभी तक क्या है, बिकॉज if any planet is placed in any sign, okay, so don't take it as a blindly as a exaltation or debilitation. Sun is placed in Aries in, let's say, in 13 degree, so we can't call it exaltation sun. Why? Because if you see this first line, Aries, it is Aries belt only. You know, whole zodiac sign is divided in 30 degrees. Oh, sorry, 360 degrees. Okay, and every sign is allotted of 30 degrees. So when within this 30 degree, there is a different allotments degree wise. Okay, so when we say exaltation, so generally you see in the books, okay, 10 degrees sun exalted. Am I correct? In books it is mentioned, na, 10 degrees sun exalted. But if sun is placed in between or within 0 to 10 degree, it is exalted. But if your sun is placed in 20 degree or 18 degrees, let's say 18 degrees of Aries, do you think sun will give same result there also? No. Why? Because in same Aries belt, 13 to 20 degrees allotted for Saturn debilitation. So when your sun is placed there, obviously it is in Aries sign, but still, you know, this is the debilitation belt for the Saturn. Okay, you will see the changes in result also. It means the exaltation is applicable only
till 0 to 10 degree of sun. Okay, so like this, for every signs there is a degree allotment. ठीक है मनीष जी, ये समझ में आया था ना? यस सर। एक सेकेंड, हिंदी में भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम जब भी उच्च राशि और नीच राशि की हम लोग बात करते हैं, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन, तो हमेशा ध्यान रखें कि उस राशि में ग्रह पूरी राशि में उच्च का नहीं होता है, पर्टिकुलर डिग्री तक होता है। ठीक है, तो इस नाड़ी ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है कि ग्रह किस डिग्री में है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट भी उसको मिलेगा उसमें। तो अगर सूर्य मेष राशि में 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तब तो एक्सॉल्टेशन हम बोलेंगे उसको। ठीक है, बट वही अगर सूर्य मान के चलते हैं अगर वो 14 डिग्री में चला गया, 15 डिग्री में चला गया, तो उसको एक्सॉल्टेशन नहीं बोलेंगे। और उसमें भी उस डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री जो है वो शनि की नीचत्व की डिग्री। तो सन उस पर्टिकुलर बेल्ट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला जितना अपने एक्सॉल्टेशन में देगा, या मार्स के मूल त्रिकोण में देगा, मंगल के मूल त्रिकोण डिग्री 11-12 डिग्री पे, क्योंकि मंगल उसका फ्रेंडली प्लेनेट है। तो स्टिल इट विल गिव गुड रिजल्ट। 21 to 30 डिग्री ओन साइन, मंगल के अपने खुद के राशि, स्टिल इट विल गिव गुड रिजल्ट। बट व्हाट अबाउट दिस 30 to 20 डिग्री? ठीक है, सो ऐसे सेम बाकी सारे राशिज के लिए डिग्री अलॉटमेंट फिक्स है। तो आपको इफ यू वांट टू यूज एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन इन मोर इफेक्टिव मैनर, यू शुड मेमोराइज दिस डिग्रीज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट एक्सचेंज में आते हैं तो क्या वो अपनी डिग्रीज भी चेंज करते हैं? उतने ही डिग्री में एक्सचेंज होगा। ओके, मान लीजिए जुपिटर 3 डिग्री का है, सपोज सैटर्न 6 साइन में है मरकरी के, ठीक है, और 13 डिग्री का है, और मरकरी 13 डिग्री, सैटर्न वर्गो में है 13 डिग्री का, ठीक है। हाँ जी, और मरकरी जो है वो एक्वेरियस साइन में है 1.43 डिग्री। तो इनका एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या इनकी डिग्रियां भी चेंज हो जाएंगी सर? यानी मरकरी 13 का हो जाएगा और सैटर्न 1 डिग्री का। जब एक्सचेंज होगा तो डिग्री भी तो एक्सचेंज करेगा ना वो। ओके, जब फ्रॉम एक्वेरियस व्हेन जुपिटर मूव्स टू वर्गो इट बिकम्स एक्सॉल्टेड जी। ओके, बट व्हेन सैटर्न मूव्स फ्रॉम द वर्गो टू एक्वेरियस इट विल गोइंग टुवर्ड्स इट्स मूल त्रिकोण साइन। राइट सर, ऐसे लेंगे एक्सचेंज। ओके सर, थैंक यू। ये बिगनर्स को ये अल्ट्रा बिगनर में कराया गया था। ठीक है, आप लोग यूज करते हैं अभी? ठीक है, अच्छा गगन जी ये समझ में आया? गगनदीप सुबोध जी, सुबोध पांडे। ठीक है, सारे कैसे म्यूट हो गए? You can unmute now. I had to okay. switch off on muting because people were interrupting. Okay. या सर ये मैंने इसके जब अल्ट्रा बिगनर्स के वीडियोस देख रहा था तो समझ आ गया था, मैंने इसका प्रिंट आउट भी निकाल के लगा रखा है जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है। Okay, so one more question. How many of you have not watched Ultra Beginner class? सब देख रहे हैं ना? I think.
तो रिकॉर्डिंग सर थोड़ा मिल जाए तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं, रिकॉर्डिंग मिला नहीं ना। कौन कौन है, कौन बोल, मैं अच्छा गगन बोला, गगन नहीं नहीं, बोला। आपका हाँ मैंने नोट कर लिया, मिल जाएगा है ना। सर ठीक है सर। ऑफिस से कल आपके पास कॉल आ जाएगा मंडे को, राइट सर। तो वो बुक दे देंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाता है ना। ठीक है, हम इस यहाँ तो करेंगे बट वो भी आप देखोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा हाँ सर, ये जरूरी है। प्रैक्टिस हो जाएगा। राइट सर। ओके नागार्जुन जी। सर मूल त्रिकोण मतलब क्या होता है सर, थोड़ा बताइए सर। मूल त्रिकोण हम करेंगे, पहले एग्जॉल्टेशन निपटाते हैं, ठीक है। ओके ओके मूल सर, ओके सर। त्रिकोण और डेबिलिटेशन ये हम सेपरेट हम टॉपिक्स लेंगे, टाइम बहुत है हमारे पास। सर मुझे अल्ट्रा बिगिनर में मैं नहीं था, एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड रिकॉर्डिंग्स आल्सो। आप इस वाले बैच में तो हो ना। हाँ तो अल्ट्रा बिगिनर आपको थिंकिफिक पे, अच्छा आप थिंकिफिक आपको मिला है एक्सेस इस क्लास हाँ का? वो मिला है, बट उसमें अल्ट्रा बिगिनर कोर्स नहीं दिख रहा मुझे। नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, वो मैं नोट कर लेता हूँ आपका भी नाम, हर्ष मोदी एंड गगन, है ना। आप दोनों को एक बार कल कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपसे, ठीक है। मैं भी अल्ट्रा बिगिनर में नहीं था, और वो मेरे पास थिंकिफिक पे अभी नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया जी। ठीक है सर, आपको भी मैं करवा दूंगा, है ना। तो उसमें हमने खाली इसको समझा था एक ओवरव्यू के फॉर्मेट में, बट इस क्लास में हम लोग एग्जॉल्टेशन, मूल त्रिकोण, डेबिलिटेशन तीनों को अलग अलग समझेंगे, इतना डिफरेंस है बस। बट स्टिल आप लोग को वो लेक्चर देखने चाहिए पुराने भी, जी, ठीक है। हाँ नागार्जुन जी बोलिए। Sir, you are discussing about the exaltation degree wise and all. So, for example, in Aries, if a sun is in 6th degree, and what if the bhava of Aries is starting somewhere in 11 or 12 degree? Can we consider that as a exaltation also? Like if bhava gets changed? No, you don't need to consider bhava here in Nadi. Okay, just consider Rashi chart, and we will calculate degree as per the Rashi chart only. Okay, Bhavashali chart and all these charts is not required. Okay, sir. Because Thank when see again their lagna become important again. Okay, so here not using lagna, so no issue. ठीक है, वो केपी से हम बाहर निकलेंगे थोड़ा सा अभी, ठीक है। तो भाव चलिए, ये सब आपको जरूरत नहीं है, जस्ट पिक सिंपल D1 चार्ट, राशि चार्ट, वहाँ डिग्रीज पे आप इसको लगाएं। श्योर सर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इसको, इजी। ओके। यस मृदुला जी। Sir, I wanted to just check the Mool Trikona degrees for sun also. Like, मूल त्रिकोण डिग्री फॉर सन? yes, sir. What is the sign for the मूल त्रिकोण for sun? Leo. In Leo sign, see Leo and Gemini, you can see these two are blank. Okay, Yes, sir. in Leo this own sign, मूल त्रिकोण sign is a whole belt allotted for the sun only. Yeah, There so is no like any, we won't have a different degrees for no degrees for that. You can use whole belt of Leo. Same thing for Gemini also. Yeah, like in Gemini, sir, there is no Mool Trikona, so it's just No मूल त्रिकोण, no exaltation. Yeah, sir, no debilitation. Nothing. But in Leo, I thought we will have different degrees for Mool You Trikona. can divide it, because I have not seen this thing. Okay, sir. Maybe 0 to 15, 15 to 30, something like this, own sign and मूल त्रिकोण. Okay, because see, own sign, मूल त्रिकोण, both will give similar result. There is much difference in that. Okay, sir. Okay, but yes, exaltation, result wise, it becomes more higher result. It will give you more better result as compared to own sign. Okay, Right. but if we see own sign and मूल त्रिकोण, both is same for the Leo. Pretty similar. Yeah. हाँ मुकेश जी। Rahu and Ketu for exaltation and मूल त्रिकोण? No, there is no any sign allotted for the exaltation, मूल त्रिकोण and all, because we have different theories for it. Okay, some people are taking different signs, some taking different sign. There is no any classical authentication evidences for it. Okay, because some say this is from the parampara we have learned, and this is my experience. Okay, so
their experience, you can call it your own experience once you test it. Okay, so once you are sure, like this particular sign is exalted or Mutrikon for Rahu, you can use it. Okay, but as a classical evidences, we don't have any support for this, so I'm not taking that particular Rahu Ketu. Okay. Okay, sir. Okay. So if anybody found any classical book, they can let me know, so we can also include that. Okay, but till now, I have not found it. Okay, so anybody else who raised his hand, I think किसने उठाया था? ठीक है. So now, this table and friendship enmity table, these two tables you need to again memorize. Okay, these are the only two things. And third is Karak Tattva. Okay, so these three tables you need to memorize because you are going to use these three tables again and again throughout the course. The rest of other things, it will come with the practice and all, but these three tables, you don't have any other options. You need to memorize it. Correct?